Hello, good morning, student. I'm Anitaka from Ajipuro classes. So today I have come with the poem of your class 9, that is from the Beehive textbook. Slumber did my spirit seal, and this poem was written by William Wordsworth. So first of all, I will discuss the title of this poem. Slumber did my spirit seal. What this title means? Here, poet tells that the slumber means sleep, spirit, soul, seal means finalize something. So here, William Wordsworth talked about his beloved, who is now totally sleep. Sleep means dead. His now she go to her dead bed, so where nobody can touch her, no, and she cannot feel anything. So this poem is very short, so this poem has only 8 lines. So now first of all I will discuss the 4 lines of this poem with you. A slumber did my spirit seal. I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. Now, in these 4 lines, the poet first of all tell about that. Write down the title of this poem. A slumber did my spirit seal, and what does here he means that his beloved now his beloved go to her dead bed where she cannot feel anything. So here she referred to his beloved whose name is Lucy. So I think student, you have read so many poems of William Wordsworth, and every time he refers his beloved whose name is Lucy. So here poet want to tell us that beloved now go to totally फिनिश्ड मीन्स फाइनली वो अपने एक कहाँ पे पहुंच गई है, जहाँ पे इंसान लास्ट टाइम अपने कहाँ पे जाता है, वो एक अपने डेड बेड के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे उसे कोई किसी का कोई डर नहीं होता, किसी दूसरे मनुष्य का कोई डर नहीं होता, ना ही वो वहाँ पे कुछ फील कर सकता है, और वहाँ पे वो जो है धरती के अंदर समा जाता है और सालों साल वो धरती को वो छू सकता है. So come to the next 4 lines. No motion has she now, no force. She neither hears nor sees, rolled around in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. Now here poet tells us about his beloved who goes to her death bed where she cannot feel anything. मीन्स नो मोशन, उसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही और उसके पास कोई फोर्स नहीं है. फोर्स मीन्स कोई स्ट्रेंथ एनर्जी नहीं है. वो ना ही वो सुन सकती किसी को, ना वो देख सकती है, और वो किसके अंदर जाकर वो समा गई है, एक धरती के अंदर. यहाँ पे ड्रूनेल का मतलब क्या है, डेली. अर्थ ड्रूनेल कोर्स इज अर्थ डेली रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. वो कहाँ पे चली गई है, वो पत्थरों और बड़े बड़े पत्थरों के और छोटे छोटे जो है स्टोन, उनके अंदर वो समा चुकी है, जहाँ पे उसे कोई उसके सोल को कोई टच नहीं कर पाएगा, ना वो खुद उसको फील नहीं कर पाएगी, वो खुद उसे महसूस नहीं कर पाएगी, और वो सालों साल किसके अंदर, वो धरती के अंदर समा जाती है. तो बच्चे आप देखते हैं जैसे क्रिश्चियंस लोग हैं, वो जब इंसान मरता है तो उसे वो क्या करते हैं, कॉफिन में डालकर वो ज़मीन में बरिड कर देते हैं, उसके ग्रेव को वहाँ पे डाल देते हैं, जहाँ पे वो सालों साल वहाँ पे ही उसके अंदर ही रहती है. तो अब जो पोएट है, पोएट को लग रहा था कि शायद उसकी बिलवड है वो कभी दुनिया से नहीं जाएगी. इट मीन्स शी नेवर स्लीप, वो कभी सो पाएगी मीन्स वो कभी डेड बेड के ऊपर नहीं जाएगी. बट
दैट वॉज द सर्कल ऑफ नेचर। तो उसे अब ये उसने ये अब फैक्ट ये रियलाइज़ किया है पोइट ने कि वो इस फैक्ट को मान रहा है कि जो लूसी है वो अब मर चुकी है, वो ना सुन सकती है ना वो देख सकती है, अब वो किसका हिस्सा बन चुकी है, वो धरती का हिस्सा बन चुकी है। सो आई थिंक दिस पोइम इज क्लियर विद यू। सो नाउ आई विल डिस्कस द लिटरली डिवाइसेस विच पोइट हैड यूज्ड in this poem. First of all, the poet used the alliteration. Alliteration, I think you know what is the alliteration? Repetition in two or more nearby words of consonant sounds. So in first four lines, slumber, spirit, seal, यहाँ पे s जो है prominent यूज़ किया गया है, and in third line she seemed, यहाँ पे एस जो है वो फिर यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंड इन नेक्स्ट फोर लाइन्स में यहाँ पे थर्ड लाइन, रोल्ड राउंड इन अर्थ ड्रोनेल कोर्स, यहाँ पे उन्होंने क्या यूज़ किया है, आर रोल्ड, आर राउंड, अर्थ में भी आ रहा है, ड्रोनेल में आ रहा है और कोर्स में भी आ रहा है, तो ये यहाँ पे एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। नाउ नेक्स्ट डिवाइस दैट इज़ द कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस, द रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। सो लास्ट फोर लाइन्स में आप देखो, थर्ड लाइन में रोल राउंड इन अ ड्रोनेल को, यहाँ पे आर एल डी जो है वो एज अ कॉन्सोनेंस के रूप में पोइट ने जो डिवाइस है दैट वाज द इंजाममेंट। इंजाममेंट में यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क नहीं है। इन थर्ड लाइन, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। एंड इन लास्ट फोर लाइन्स में, रोल राउंड इन अर्थ ड्रोनेल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। तो ये लिटरली डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ की गई है। एंड द पोइट यूज द राइमी स्कीम दैट इज ए बी सी डी एंड सी डी। तो यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम है, यहाँ पे जो सील है दैट इज रेफर्स विद फील fear, so that is identify A, fears B, and here is also B, so A B. Okay, now next last four lines में यहाँ पे force that is resembled with course, so that is identify as C, C's D, trees D, C D. So rhyming scheme is A B C D, which have poet used in this poem. So with this I am going to finish this topic. So if you like this poem, then please like and subscribe and share my channel EduPro Classes, and hit the I bell icon so that you will get the new videos related to other chapters. Thanks.